Good morning, students. You are welcomed in your biology class, and our today's topic is spermatogenesis or spermatidogenesis, means formation of sperms or spermatids, and it involves three phases, that is multiplication phase, growth phase, and maturation phase. What happens in multiplication phase? That spermatogonia, they undergoes mitotic division. All of you are familiar that what is spermatogonia. In the testis, seminiferous tubules are present. These seminiferous tubules have two types of cells. One is of spermatogonia and other is of Sertoli cells. Now these spermatogonia, they will undergo mitotic divisions, and many of the spermatogonias will be formed which are diploid in numbers, means which have double number of chromosomes. And which division is taking place? Mitotic division is taking place. Now many of the spermatogonias are formed by mitotic division. Now the second phase is growth phase. Now these spermatogonial cells or the spermatogonias, they will grow in size. How they will grow in size? There will be increase in the amount of cytoplasm, and they will become mature, and they will be called as primary spermatocytes. Now these primary spermatocytes, they undergo meiosis or undergo meiotic division. So meiotic division takes place in two phases, meiosis 1 and meiosis 2. So during the meiosis 1, what will happen? Two equal haploid cells which are called as secondary spermatocytes will be formed. Then this will undergo second meiotic division and four haploid spermatids will be formed. मीन्स meiotic डिवीजन हुआ फर्स्ट, meiotic डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं, और जो सेकेंड meiotic डिवीजन है उसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रह रहे हैं, एंड 4 cells आर फॉर्म. फ्रॉम 1 2 cells आर फॉर्म, एंड फ्रॉम 2 to 4 cells आर फॉर्म. एंड इन द लास्ट, at the last phase, that is maturation phase, 4 spermatids will be formed from the secondary spermatocytes. Now spermiogenesis. What is spermiogenesis? Inactive non-motile spermatids, अभी वो inactive हैं, और they will get converted into active motile spermatozoa or sperms. जब तक वो inactive हैं they are called as spermatids. Spermatids जो हैं अब अपने हेड, क्योंकि ये कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? seminiferous tubules में, और वहाँ पर जो second type of cell है that is Sertoli cells. Now these spermatids will embed their head into the Sertoli cells, and these Sertoli cells will provide nutrition to the spermatids, and these spermatids will be converted into sperms, and this is known as spermiation. So finally released from the seminiferous tubules, जो फॉर्म हुए स्पर्मेटिड्स, सर्टोली सेल्स से उन्होंने न्यूट्रिशन लिया, और उसके बाद जो है दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. Now if we see the flow chart of the spermatogenesis, spermatogenesis is controlled by hormones. So first is GnRH, gonadotrophin releasing hormone, which is a hypothalamic hormone. In 11th standard we have studied about various glands, endocrine glands. So यहाँ पर जो hypothalamus है, it is an endocrine gland which is situated in the brain, and what it will do, this will give message to the pituitary gland. Pituitary gland is called as the master gland, and two types of hormones will be released, that is LH and FSH. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. So you are able to see that this hypothalamus, it is sending message to pituitary. Pituitary is releasing two types of hormone, that is LH and FSH. Now LH, function of LH is to release the male hormone that is known as androgen, and second, this androgen, what androgen will do? Androgen will stimulate the spermatogenesis. यानी कि जो spermatogenesis है, formation of sperms है, it is under the control of hormones, and hormones are released by hypothalamus and pituitary gland. Two types of hormones, LH and FSH. LH will release androgen, and androgen will help in spermatogenesis. And the second one is FSH, follicle stimulating hormone. This follicle stimulating hormone will help in the production of Sertoli cells, and these Sertoli cells, they will help
for the secretion of some of the substances which are necessary for spermiogenesis or the formation of sperms. So this is the spermatogenesis and hormones. Here you are able to see how the sperms are getting mature. ये एक डायग्राम इन्होंने शो कर रखा है. A, this is spermatid nucleus. Then centriole is there. Centriole is present in cells of humans which helps in cell division. Then you are able to see flagellum, microtubule like structure. Flagellas जो हैं they are thread like structure and they help in the locomotion. So sperm जो है it is necessary for the sperm to have movement, so the flagella is present there. Mitochondria is there which will provide energy, which is called the powerhouse of the cell. Sperm is also a cell, so it has all the organelles. And flagella is also there. This flagella will grow further. Acrosome. Acrosome is a pointed area present at the head of the sperm, and it is necessary during fertilization, which we will be studying in detail. And at last we are able to see a mature sperm which has head, middle piece and tail. This is the structure of a sperm, well labeled diagram it is shown here, where acrosome, head, nucleus containing chromosomes, then middle piece, and in the last what is given, tail is given. So this is the structure of sperm, that it consists of head, middle piece and tail. Now we will talk about the functions of all these parts of the sperm. First is head. As you have seen in the diagram also, that head is somewhat elongated and it has a nucleus. So nucleus is haploid, means half number of chromosome, because this sperm has half number of chromosome. क्यों? क्योंकि ये meiotic division से form हुआ है. Then head के just anterior पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं. यू आर एबल टू सी हेयर ऑल्सो. न्यूक्लियस इज समवॉट elongated. This is the head, and this acrosome, it is a pointed structure present at the head. So nucleus elongated, then acrosome is present. What is the function of acrosome? Acrosome has hydrolytic enzymes, and what these hydrolytic enzymes will do, they will help to enter into the egg during fertilization. So acrosome के पास hydrolytic enzymes हैं, तो जाके बाकी जो cells present होगी egg के surrounding में, उनको ये dissolve करके, and it will make its entry, or it will make the entry for the sperm to enter into the egg during fertilization, and it is derived from Golgi complex during division. Acrosome कहाँ से form हुआ? Golgi complex से form हुआ. Then neck, it is the connecting part which connects the head and the middle piece. Then middle piece has mitochondria, which is necessary for the production of energy for the movement of the sperm. And tail, it is long cylinder vibratory structure which helps in the locomotion for the movement of the sperm. Then during ejaculation, means during one sperm production time, 200 to 300 million sperms are produced, and out of those 60% have normal shape and size and 40% have motility. This is the amount of sperms produced during one ejaculation. Next is oogenesis. But before oogenesis, let us talk about that when the sperms are released from the seminiferous tubules. See, sperms are formed in the testes. Testes are lined by seminiferous tubules. Now in seminiferous tubules, what has been formed? Sperms have been formed. Now when these sperms, they will be transported through the accessory ducts. If you remember the part of the male reproductive system, जहाँ हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के पास जो है उसके बाद क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, वॉस डेफरेंस है, वॉस एफरेंस है. तो यहाँ जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं, अब वो जो है दे विल कहाँ आ गए, टेस्टिस में थे, और टेस्टिस से अब ये कहाँ जाएंगे, मूव करेंगे जब, तो वहाँ पर एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो दैट इज़ नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स.
यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के साथ जो लिक्विड जो सिक्रीट करेंगे, जो प्लाज्मा वो सिक्रीट करेंगे अलोंग विद द स्पर्म, इसे हम बोलते हैं सीमेन। एंड जो हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड दीज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स that is maintained by the male hormone, and the name of the male hormone is androgen. So I think you have the clear idea that how sperms are produced. Sperms testis में फॉर्म हुए, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, वहाँ से जो स्पर्म है वो रेटिटेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के से होते हुए अब उन्हें कहाँ आना है, यूरिथ्रा में। तो वहाँ उससे पहले जो भी इनके पास सेमिनल वेसिकल हैं या प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स हैं या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये अपनी सिक्रीशंस इन्हीं रास्ते में प्रोवाइड करती हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं उन्हें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता रहे। एंड दी स्पर्म्स along with these nutrient mediums that forms the semen. So this we have talked about the male reproductive system, and now we will talk about the oogenesis. Oogenesis is formation of egg or the production of egg, and egg is produced by the female reproductive system, and the part which is producing egg is ovary. So the formation of egg, and as we all know that जो गोनाड्स जो हैं, जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, सेक्स सेल्स आर हैप्लॉइड इन नंबर, कीप दिस थिंग इन माइंड। बॉडी जो है उसके पास डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, लेकिन जो सेक्स सेल्स होती हैं चाहे वो स्पर्म है या फिर एग है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ। सो द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम द डिप्लॉइड oogonia। अब कौन सी सेल्स, ओवेरी की जो oogoneal सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis, एंड इट विल स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फीमेल जो है व्हेन इट इज़ इन इट्स मदर बॉडी, जब मदर वॉर्म में है, तभी एक फीमेल जो है उसकी बॉडी में एग प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैच्योरेशन जो है वो प्यूबर्टी पर होती है। सो व्हाट विल हैपन, गैमेट मदर सेल एट बर्थ मेनी मिलियंस इन फीटल ओवेरी। येस, व्हाट इज़ गिवन, oogonia। oogonia जो है वो सेल्स हैं जो कि क्या बनाएंगी, एग बनाएंगी। oogoneal सेल्स जो हैं दीज आर गैमेट मदर सेल्स, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 2n है, एंड दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस इन द फीटल ओवेरी, यानी फीटस जो गर्ल है, फीमेल गर्ल जो अभी फीटस स्टेज में है, उसकी ओवेरी के अंदर जो है मिलियंस ऑफ oogonia विल बी फाउंड। नाउ दिस प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, व्हाट विल हैपन, वहाँ पर 2n है, oogoneal सेल्स जो हैं उनके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन एग के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। सो व्हाट विल हैपन, during primary oocyte, meiotic division will start. Meiotic division has many phases, prophase, metaphase, anaphase, telophase. So prophase 1 will take place and meiotic division, and it will get arrested in this stage. यहीं पर prophase 1 तक division होता है and it stops here. Then primary follicle, प्राइमरी oocyte प्लस granulosa cells फॉर्म हो जाएंगी प्राइमरी फॉलिकल के टाइम। मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स जो कि फीटल ओवेरी में प्रेजेंट थे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और नियर अबाउट जो हैं मेनी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो गए। 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे व्हेन ए फीमेल गर्ल रीचेस एट प्यूबर्टी। तो उसकी ओवेरी में एग्स आर प्रेजेंट इन नंबर, एंड दैट इज 60,000 to 80,000. Now from these primary follicles, secondary follicles will be formed, and how they will be formed and or what changes will take place. Primary follicles, they will be surrounded by more of the granulosa cells and theca membrana, और इस तरह से it will form the secondary follicle. So you are able to see कि कौन कौन से changes हो रहे हैं during oogenesis. oogoneal सेल्स प्रेजेंट हैं, oogoneal सेल्स मिलियंस में नंबर में प्रेजेंट हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके पास, फीटल ओवरी में प्रेजेंट हैं। उस एक बार ड्यूरिंग द फीटल स्टेज जितने oogonia जो है फॉर्म हो गए, आफ्टर दैट ना ही तो कोई ऐड होते हैं और कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। नो मोर oogonia विल बी फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ।
नाउ व्हाट विल हैपन, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो रही है एंड इट इज़ गेटिंग अरेस्टेड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte स्टेज. नाउ दिस प्राइमरी oocyte in during primary oocyte what will happen, लेयर्स ऑफ सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स सराउंड करेंगी, वो प्राइमरी फॉलिकल बन जाएंगी. मैनी ऑफ द फॉलिकल्स विल गेट डीजनरेटेड. यहाँ पर आप याद रखेंगे कोई एडिशन नहीं होती फॉलिकल्स की, सिर्फ क्या होगा, डीजेनरेट हो सकते हैं और कितने रह जाएंगे, 60,000 to 80,000. एंड ये डीजेनरेशन अप टू प्यूबर्टी होता है और उसके बाद ये मैच्योर होना शुरू कर देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं. सेकेंडरी फॉलिकल फिर ट्रांसफ़र होते हैं, transforms into tertiary follicle. Then tertiary follicle has a fluid filled cavity as you are able to see in this. The secondary follicle के पास जब उनको tertiary follicle में change होना है, a cavity will be formed and this cavity is called as antrum. It will be surrounded by the theca layers, that is theca interna and theca externa. Theca interna, it has 10 to 15 layer of follicle cells. प्राइमरी oocyte जो कि 2n था, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज विल गेट इंक्रीज एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल गेट कंप्लीटेड ड्यूरिंग टर्शरी फॉलिकल. और उसमें क्या होगा, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा और एक पॉलर बॉडी फॉर्म होगी. नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte. वेरियस चेंजेस विल टेक प्लेस. साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहेगा. टर्शरी फॉलिकल इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. इट विल बी सराउंडेड बाय द जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन. Graphian follicle will get rupture and it will release the ovum. So this is the process of ovulation in female which is known as oogenesis. And you are able to see the labelings which we have talked about. Primary follicles, then secondary follicle, then you are able to see that a cavity is being formed, then developing corpus luteum, degenerating corpus luteum. So these are the various labelings which are showing the structure of an ovary. And if we talk about the TS of the ovary, TS of the ovary has different follicles. हो सकता है some of the follicles will be in primary follicular stage, some will be in tertiary or secondary follicular stage. This primary follicle will develop into Graafian follicle and which will be converted into mature ovum. One mature around 14th day of menstrual cycle. So 28 days cycle is there and an egg get matured during the 14th day and it gets ruptures and it release. This is known as ovulation. After the ovulation, this follicle get filled with lot of blood clot and yellow cells, that is called as corpus luteum, and then it will travel through the fallopian tube and it will reach to the uterus. So this is the structure of the TS of ovary and how the egg is formed. These are the stages showing different stages of development of follicles. सबसे पहले हम देख रहे हैं primary oocyte. Primary oocyte is developing into oocyte and follicles. Then again more development, it is getting converted into secondary oocyte, mature follicle, then corpus luteum, then degenerating corpus luteum and egg is released, that is called as ovulation. So these are the different stages of Graafian follicle and this is a diagram of mature follicle where you are able to see कि यहाँ पर जो है एक one egg is shown here and this is the corpus luteum which is surrounding it. So these are the different phases you are able to see here. 2n, यहाँ पर ये oogonal cells हैं जो कि fetal ovary में present थी. Division हुआ, many of the oogonias are formed. Division is mitosis. Now these oogonias will be converting into primary oocyte. Some of the oogonias will behave as primary oocyte. Now first meiotic division will take place and there will be reduction in the number of chromosomes and it will form secondary oocyte and first polar body. Now again one more meiotic division, second meiosis 2 will take place and it will form ovum and second polar body. So these are the different phases which takes place during the oogenesis.
This oogenesis is also getting completed into three phases: multiplicative phase, growth phase and maturation phase. Multiplication phase में क्या होगा, कुछ प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करेंगी, जो कि किसको सराउंड कर रही हैं, ओवेरी को, वो दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली. और जब वो प्राइमरी जर्म सेल्स, इफ़ दे हैव स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग माइटोटिकली, many of the primary germ cells will be formed and this results in the formation of egg mother cell और oogonia. ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा. ओवेरी की लाइनिंग की सेल्स को हम कह रहे हैं प्राइमरी जर्म सेल्स. प्राइमरी जर्म सेल्स दे विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स. मेनी प्राइमरी जर्म सेल्स और ओगोनियाज विल बी फॉर्म्ड. Now each group of cells forms a round mass called egg nest. Egg nest will be formed. चारों तरफ उनके cells surround कर लेंगी. Now growth phase will take place and this growth phase takes long duration. देखिए fetal ovary में start हुए और वहीं पर जो है मैचुरेशन तक फिर कोई चेंजेस नहीं होते. सो 12 to 13 years जो है वो ग्रोथ फेज़ है. Now one of the diploid oogonia undergoes growth increasing in the cytoplasm and accumulation of yolk. बहुत सारे जो हैं oogoनियाज प्रेजेंट हैं. कोई एक oogonia मैच्योर होता है. किस तरह से, lot of cytoplasm will be produced and yolk and it will be transferred into primary oocyte. Now other oogonia form single layered follicular epithelium that is called as primary follicle. दिस प्राइमरी फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल. कैसे, उसके बाहर और ग्रैन्युलोसा की सेल्स सिक्रीट हो जाएंगी. देन सेकेंडरी फॉलिकल will be converted into tertiary follicle and this tertiary follicle will get converted into Graafian follicle. So these are the different phases of formation of egg or oogenesis.